Hey everyone, a very warm welcome to PsychoHub's YouTube channel. And today we are going to solve the first 20 questions of RML 2023 question papers of psychology with a few explanations. Whether you are preparing for competitive exams or just want to test your knowledge, this video is just for you. So let's get into this video and try to solve a few questions. This is how the first page is looking, and we are going to solve section A of our question paper. The first question that we have here is, which of the following is an example of quantitative research? Quantitative research मतलब आपका metric data आ जाता है, metric data that you will be using जिससे आप numerical data. केस स्टडी इज क्वालिटेटिव, एथनोग्राफी इज ऑल्सो क्वालिटेटिव. सर्वे में आपको डेटा मिलता है जो न्यूमेरिकल होता है, वेयर इन द पीपल एक्चुअली फिल इन क्वेश्चनर्स. सो आपका आंसर हो गया सर्वे. ग्राउंडेड थ्योरी इज मोर ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Alright, I hope you got this correct. If you didn't, it's alright. Let's move on to the next. I hope आपके पास अपनी notebooks है so that you are noting down all the answers or explanations that we are giving here. What type of sampling method involves selecting every nth individual? Every kth या every nth individual अगर आप एक सैम्पल सेट से ले रहे हो या फिर सैम्पल फ्रेम से ले रहे हो, एवरी सेकेंड और एवरी nth person, every fifth person that you are selecting, it comes in the systematic sampling, meaning आप अपना sample in a systematic manner you are taking. Simple random sampling is normal आपकी random sampling. Convenience sampling और आपकी हो जाती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाती है आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग में. दिस इज नॉन रैंडम, वेयर इन आपके आसपास के जो लोग होते हैं, द पीपल whom you are convenient, मतलब ऐसा सैम्पल सेट जो आपको बहुत इजीली मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल होता है या फिर कन्वीनियंट होता है आपके लिए. अगर आप उन लोगों को चूज करते हैं टू बिकम अ सैम्पल इन योर रिसर्च, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग. Stratified sampling is basically you are dividing stratas. Stratas होते हैं group. You are dividing your samples into groups. Alright. तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन था. अभी आप देख रहे हैं हमारे दो क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी से ही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट 2, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स. Moving on, question number 3. Which of the following, just a second, मेरा, yes, और आई अपोलोजाइज, ये थोड़ा ग्लिच आ गया था. सो हमारा नेक्स्ट है, which of the following is an example of nominal scale of measurement. आपके 4 टाइप के होते हैं. You have nominal, that is just the classification. Ordinal, rank order. Then you have interval, and then you have ratio. ये आपकी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है. नॉमिनल में आपका बेसिकली आ जाता है आपका, आई जस्ट चेंज पेन का कलर, क्लासिफिकेशन. अगर आप किसी चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हैं, वेरी बेसिक थिंग्स, जैसे अगर आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, योर मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मेल और अ फीमेल और अदर ट्रांसजेंडर, so and so, whether you are an Indian. ठीक है, let's move on to the next.
क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन 4 है आपका, इन विच स्केलिंग टेक्निक आर रिस्पोंडेंट्स आस्क्ड टू प्लेस आइटम अलॉन्ग अ कंटिन्यूअम अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. ये प्रेफरेंस वर्ड जब आ जाता है, इट मीन्स यू आर ranking your preferences, you are ranking the data. When you are ranking the data, you are setting it in an order. एक order आप बना रहे हैं, that is your ordinal scale. Alright. I hope आपके अभी तक questions सही जा रहे हैं and you are able to understand how the questions are being asked. आप देख सकते हैं आपके पहले 5 questions, पहले 6 questions are coming from research methodology itself. So question number 5 we have, which scaling technique assumes equal intervals between consecutive scales and has a true zero point. यहाँ पे true zero की बात हो गई तो हमारा ratio scale है जिसका true zero होता है and it has equal intervals and all the other properties of the preceding scales which is nominal, ordinal and interval. आपके interval scale में arbitrary zero होता है और इसमें होता है एक ट्रू जीरो. Alright, let's move on to our next question, which is question number 6. Question number 6 क्या कह रहा है? In which type of research design does the researcher observe and describe the phenomena only without manipulating of the variables? We are just trying to observe and describe the phenomena that we are that we want to study. So we are not exploring anything, any of the causal variables. We are not trying to find the cause and effect. So हमारा आंसर, and we are not even manipulating of variables आपका experimental research में होता है और experimental design में होता है. So this is your descriptive research. Moving on, we have question number 7. Question number 7. Question number 7 हमारा क्या कह रहा है? What is the primary objective of a literature review? हम एक literature review क्यों करते हैं? To summarize the researcher's findings? No. To establish the credibility of the researcher? नहीं. अपनी रिसर्च को एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देने के लिए, दैट आवर रिसर्च इज बेस्ड अपॉन अ थ्योरी, वी हैव टू डू एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. हेंस to provide the theoretical framework for our study, literature review is the primary objective. And as in, the primary objective of doing a literature review is to provide a theoretical framework and to ignore previous research finding. Nahi, when you are doing a literature review, you try to understand the theory on which your hypothesis can be based, and you also try to find gaps, research gaps. रिसर्च गैप्स फाइंड करना चाहते हैं आप. ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिसर्च एथिक्स? काफ़ी लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट रिसर्च एथिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि विदाउट कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च यू कैन नॉट बी अ गुड रिसर्चर. फॉलोइंग लीगल रेगुलेशंस ओनली? क्या सिर्फ लीगल रेगुलेशंस फॉलो करना रिसर्च एथिक्स में आता है? नहीं. मैनिपुलेटिंग द डेटा? बिल्कुल भी नहीं.
You are faking your data. No, ignoring informed consent. Nahi, the participants should be informed about what they are becoming a part of. So ensuring the confidentiality of the data, that the data will not be shared with any of the other participants or individual, or publicly पब्लिसाइज्ड इन द सेंस कि इस इंडिविजुअल ने ये आंसर दिया, इस इंडिविजुअल ने ये आंसर दिया, वो हम नहीं कर रहे हैं. सो वी आर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द पार्टिसिपेंट्स कैन रिमेन एनोनिमस व्हेन दे आर becoming a part of your research and sharing their data with you. Okay? All right. Moving on, we have our ninth question. Ninth question क्या है हमारा? What is the purpose of formulating a hypothesis in research? हम hypothesis क्यों formulate करते हैं in a research? To prove the researcher's point of view, like that is one of the point, but hey, come on. To manipulate the results नहीं, to avoid conducting a literature review नहीं, आपका hypothesis formulate होगा ही आपकी literature review पे. It is to guide the data collection and analysis process. आपके hypothesis, based upon the hypothesis that you are creating, you will select your methodology, you will select how your data is to be collected, you will select what sample size that you will be choosing. Basically your whole methodology depends on the hypothesis. If you're talking about hypothesis, I would like to add on that you should know that there are two hypotheses. There's one null hypothesis and there's one alternative hypothesis. Null hypothesis में आपको क्या करना होता है? You try to you say that there are no the variables are not at all correlated to each other, and there is no visible effect on of one or the other. However, in alternate hypothesis हम उसको change करते हैं. Our major agenda of conducting a research is to reject this null hypothesis and then formulate an alternative hypothesis. आपके alternative hypothesis दो types के होते हैं. You have directional hypothesis and you have non-directional hypothesis. If you want to learn more about this, I will link down a video to for you to understand what exactly is hypothesis, why it's important and why it's not important. वैसे important तो है ही. And directional hypothesis क्या होता है, non-directional hypothesis क्या होता है. Alright, since we are in a bit of a time crunch, we will move forward. Our 10th question is, which of the following is a good characteristic of a good research? हम अच्छी research क्या होती है? Biased findings नहीं, lack of clarity in objectives नहीं, limited scope of study नहीं. A good research is reproducible. It can be replicated. The results reproducibility of results is basically आपका result same आएगा if you replicate that particular experiment. If the result is coming out the same, that means it was a quality research. Moving on, we have what is a criteria for good measurement? Good measurement, we are basically talking about validity and reliability here. अगर मेजरमेंट अच्छी होती है तो जो स्कोर्स आते हैं दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन नेचर एंड ऑब्जेक्टिविटी. If objectivity is maintained, then your measurement criteria for measurement is good, and you need to have high reliability. और यहाँ पे कंसिस्टेंसी हो रही है किसकी? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स. कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इज ऑल्सो नोन एज रिलायबिलिटी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल? एटीट्यूड को मेजर करने के लिए वी हैव लिकर्ट स्केल, and Likert scale is a form of interval scale only. The most appropriate answer would be Likert scale, क्योंकि हम यहाँ पे एटीट्यूड की बात कर रहे हैं particularly. Question number 13, we have, which of the following is an example of non-parametric data? आपको पता होना चाहिए non-parametric data के अंदर आता है आपका nominal and ordinal.
डेटा। पैरामेट्रिक डेटा होता है आपका इंटरवल and ratio. So if we are talking about non-parametric data, we are talking about rank order basically. ये आपका सारा interval and ratio scale पे आ जाता है. So the rest is parametric data. Question number 14. What is the purpose of editing in data processing? Editing हम क्यों करते हैं data की? To correct the errors and inconsistency in data. To collect primary data, we have already corrected the data when now we are processing it. Hence, it helps us, to categorize and organize the data and find basic errors or inconsistencies that we have in our data. यहाँ पे भी लिखा हुआ to organize the data into categories. We have already organized the data. We are just trying to find the inconsistencies in our data. Question number 15. What does coding involve in data analysis? Coding हम किस चीज के बारे में काम कर रहे हैं? ग्राउंडेड थ्योरी की कोडिंग हो रही है, सिलेक्टिव, एक्सियल एंड coding. So wherein you are organizing the data into categories or group. जब हम qualitative data को that you collect via making short notes or memos, you try to organize the data into certain themes and allot codes into it, and then based on that codes you select the uh, you know you select the most important categories or groups of the data that you have made. Collecting raw data आपका first step हो जाता है in qualitative research or grounded research, and then you are correcting errors in the data. Not necessarily, you organize the data and then you present the data in some tabular form or some categories that you have done in grounded theory. 3 steps होते हैं: open coding, axial coding, and then you have selective coding. What is the classification in the context of data analysis? Classification करना क्या होता है? We are organizing the data into certain categories and groups. Which method of data presentation involves arranging data into rows and columns? हम data को certain rows में डाल रहे हैं एंड वो कॉलम में आ रहा है. एज यू कैन सी ये थोड़े एक्सेल शीट का फॉर्म दे रहा है. वी आर डूइंग टैब्यूलेशन हेयर. हम कोई डायग्राम नहीं बना रहे. वी आर नॉट प्रेजेंटिंग इट इन एनी ग्राफ राइट नाउ एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग अ चार्ट. वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ टेबल. What is the main purpose of research report? Our main purpose of writing a report is we want to communicate our research findings. हमने क्या research में पता करा. We conducted a research and what were our findings. That is the main agenda of writing a research report and then sharing it with the public or people who are interested in reading about research. Then we have in which step of writing a research report findings are interpreted. जो आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होती है, मतलब आपका रिजल्ट क्या रहा. आपका P लेस देन 0.05 था या फिर आप उसके हिसाब से यू विल रिजेक्ट योर और एक्सेप्ट योर नल, या फिर आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या था. ऑलराइट. And lastly, we have what is the purpose of referencing in a research report. हमारा research report में हम references क्यों करते हैं? अगर हम डायरेक्टली उनकी ही थ्योरी लिख देते हैं, if we are just taking up the sentences that they have written and showing it up as our own, that will be subjected to plagiarism. हम plagiarize कर रहे हैं. हमारा मेन एजेंडा होता है रेफरेंसेस का, टू लिस्ट द सोर्सेस
that we have used in the report. मतलब हम कौन से sources से हमने अपना डेटा या फिर अपनी थ्योरी या फिर देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस दैट वी टेक जिससे हम साइट करते हैं. ठीक है, वी साइट सर्टेन स्टडीज in our data, and from wherever we have cited those studies, we add those studies in our references. That is the last part of your research writing or research report. And that is it for this part. We'll be continuing from question number 21 in the next part. Till then, keep on learning, keep on revising, and all the very best. आपका exam 9th को है, and I know that if you are watching this video, if you are making notes, if you are clearing your weak areas, you will be able to secure a seat in Clinical Psychology RML 2025. All the best, everyone. Have a wonderful day or evening or just a great hours ahead. Good day.